भक्ति की परिभाषा। भक्ति योग भगवान के लिए एक वास्तविक खोज है। एक खोज है जो प्रेम में शुरू होती है, जारी रहती है और प्रेम में समाप्त होती है। ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम के पागलपन का एक क्षण हमें शाश्वत स्वतंत्रता प्रदान करता है। नारद भक्ति सूत्रों की अपनी व्याख्या में कहते हैं, भक्ति ईश्वर से गहन प्रेम है। जब मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो वह सभी से प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता है, वह हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्यार को किसी भी सांसारिक लाभ के लिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सांसारिक इच्छाएं रहती हैं, तब तक उस तरह का प्यार नहीं आता है। भक्ति कर्म से बड़ी है, योग से बड़ी है, क्योंकि इन्हें कुछ इरादे को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जबकि भक्ति उसका अपना फल है, उसका अपना साधन है और उसका अपना अंत है। ज्ञान और भक्ति में वास्तव में इतना अंतर नहीं है जितना लोग कभी कभी कल्पना करते हैं। हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि अंत में वे एक ही बिंदु पर एकाग्र होकर मिलते हैं। ऐसा ही राजयोग के साथ भी है, जो हमें उसी लक्ष्य की ओर ले जाता है जिसे मुक्ति पाने के साधन के रूप में अपनाया जाता है, न कि कोई असावधान की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक उपकरण के रूप में। भक्ति का एक बड़ा लाभ यह है कि यह महान दिव्य अंत तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका है, और इसका बड़ा नुकसान यह है कि अपने निचले रूपों में यह कई बार भयानक कट्टरता में बदल जाता है। हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म में कट्टर दल भक्ति के निचले स्तरों पर इन उपासकों से लगभग अनन्य रूप से भर्ती किए गए हैं। किसी प्रिय वस्तु के प्रति आसक्ति या निष्ठा का वह एकाकीपन, जिसके बिना कोई सच्चा प्रेम विकसित नहीं हो सकता, बहुत बार अन्य सभी चीजों की निंदा का कारण भी होता है। हर धर्म या देश के सभी कमजोर और अविकसित दिमागों के पास अपने आदर्श से प्यार करने का एक ही तरीका होता है, यानी हर दूसरे आदर्श से नफरत करना। यहाँ उसी व्यक्ति की व्याख्या है जो ईश्वर के अपने आदर्श से इतना प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ है, अपने धर्म के आदर्श के प्रति इतना समर्पित है, वह किसी अन्य आदर्श के बारे में कुछ भी देखता या सुनता है तो वह एक चीखने चिल्लाने वाला कट्टरपंथी बन जाता है। इस तरह का प्यार कुछ हद तक मालिक की संपत्ति को घुसपैठ से बचाने की कुत्ते की स्वाभाविक बुद्धि की तरह है। केवल कुत्ते की स्वाभाविक बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से श्रेष्ठ है, क्योंकि कुत्ता कभी भी अपने मालिक को विरोधी के रूप में गलत नहीं पहचानता, चाहे उसकी पोशाक कुछ भी हो। फिर से कट्टरपंथी निर्णय की सारी शक्ति खो देता है। व्यक्तिगत मुद्दे उसे इतना आकर्षित करते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी उससे क्या कहता है, चाहे वह सही हो या गलत। वह हमेशा एक बात पर ध्यान देता है कि यह बात कौन कहता है। वही व्यक्ति जो दयालु, अच्छा, ईमानदार और अपनी राय के लोगों से प्यार करता है, वह अपने ही धार्मिक भाईचारे से परे लोगों के खिलाफ निर्देशित होने पर सबसे बुरे काम करने से नहीं हिचकेगा। लेकिन यह खतरा केवल भक्ति के उस चरण में होता है जिसे प्रारंभिक कहा जाता है। जब भक्ति परिपक्व हो गई है और उस रूप में चली गई है जिसे सर्वोच्च कहा जाता है, तो कट्टरता के इन भयानक अभिव्यक्तियों का कोई डर नहीं है। वह आत्मा जो भक्ति के इस उच्चतर रूप से प्रबल है, वह प्रेम के देवता के इतना निकट है कि वह घृणा के प्रसार का साधन नहीं बन सकता। Definition of devotion. Devotion is a real, genuine search after the Lord, a search beginning, continuing, and ending in love. One single moment of the madness of extreme love to God brings us eternal freedom. Devotion, says Narada in his explanation of the devotion aphorisms, is intense love to God. When a man gets it, he loves all, hates none, he becomes satisfied forever. This love cannot be reduced to any earthly benefit, because so long as worldly desires last, that kind of love does not come. Devotion is greater than karma, greater than yoga, because these are intended for an object in view, while devotion is its own fruition, its own means and its own end. There is not really so much difference between knowledge and devotion as people sometimes imagine. We shall see, as we go on, that in the end they converge and meet at the same point. So also is it with Raja Yoga, which when pursued as a means to attain liberation, and not as an instrument to hoodwink the unwary, leads us also to the same goal. The one great advantage of devotion is that it is the easiest and the most natural way to reach the great divine end in view. Its great disadvantage is that, in its lower forms it oftentimes degenerates into hideous fanaticism. The fanatical crews in Hinduism, or Mohammedanism, or Christianity,
have always been almost exclusively recruited from these worshippers on the lower planes of devotion. That singleness of attachment to a loved object, without which no genuine love can grow, is very often also the cause of the denunciation of everything else. All the weak and undeveloped minds in every religion or country have only one way of loving their own ideal, that is, by hating every other ideal. Herein is the explanation of why the same man who is so lovingly attached to his own ideal of God, so devoted to his own ideal of religion, becomes a howling fanatic as soon as he sees or hears anything of any other ideal. This kind of love is somewhat like the canine instinct of guarding the master's property against intrusion, only, the instinct of the dog is better than the reason of man, for the dog never mistakes its master for an enemy in whatever dress he may come before it. Again, the fanatic loses all power of judgment. Personal considerations are in his case of such absorbing interest that, to him, it is no question at all what a man says, whether it is right or wrong. But the one thing he is always particularly careful to know is, who says it? The same man who is kind, good, honest, and loving to people of his own opinion, will not hesitate to do the vilest deeds, when they are directed against persons beyond the pale of his own religious brotherhood. But this danger exists only in that stage of devotion, which is called the preparatory. When devotion has become ripe and has passed into that form which is called the supreme, no more is there any fear of these hideous manifestations of fanaticism. That soul which is overpowered by this higher form of devotion is too near the God of love to become an instrument for the diffusion of hatred.